नमस्कार, हजुरहरूलाई अनलाइन क्लासमा स्वागत छ। My name is Madan Bhandari from Vishwati. Today I am going to teach class 9 science unit 2 force and motion. But we discuss about first of all we discuss about the equation of motion. Or what is force? Force is external agency which change. Force is external agency which change the state of motion or motion to rest or rest to motion or change shape and size direction is known as force. Its SI unit is Newton and CGS unit is Dyne, or the pulling and pushing factor also known as force. Pulling and pushing factor also known as force. First of all, we discuss about the equation of motion. What do you mean by equation of motion? The relation between initial velocity, final velocity, distance, acceleration, average velocity is known as equation of motion. Here given for some equation motion, A equal to B minus U upon T, B equal to U plus AT, AB means average velocity equal to U plus B upon 2, S equal to U plus B upon 2 into T, B square equal to E square plus 2AS, S equal to UT plus 1 upon 2, etc. That is the equation of motion. Today I am going to prove the equation of motion. First of all, A, prove B equal to U plus AT. Prove B equal to U plus AT. कुनै एउटा बस पर एउटा हाम्रो के छ बस छ, त्यो बस प्रगति नगरबाट कहाँ गयो त दलदले हो। एउटै बस छ, त्यो बस कहाँ गयो दलदले। प्रगति नगरबाट दलदलेसम्म कति डिस्टेन्स कभर गर्यो? यस डिस्टेन्स कभर गर्यो। स्टार्टिङ भेलोसिटीलाई के भनिन्छ? यु। र इन्डिङ भेलोसिटीलाई के भनिन्छ? भी। कति एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्यो त? ए भन्ने एक्सेलरेसन प्रोड्युस गर्यो। लेट U means initial velocity. के छ? एउटा बस छ, त्यो बस के भयो त प्रगति नगरबाट कहाँ आयो? दलदले। प्रगति नगरबाट दलदलेसम्म जान कति डिस्टेन्स कभर गर्यो? यस डिस्टेन्स। हाउ मेनी एक्सेलरेसन प्रोड्युस? ए एक्सेलरेसन प्रोड्युस। स्टार्ट velocity is U, initial velocity. Ending velocity is V, final velocity. V means final velocity. S means distance covered. S means distance covered. कति टाइम टेकन गरे त? कति टाइम लाग्यो त? T भन्ने टाइम टेकन। T means टाइम टेकन। दलदलेबाट प्रगति नगरबाट दलदले कति लाग्यो त? T। टाइम टेकन T. A, how many acceleration produce? A acceleration produce. A dot B means average velocity. We know that. Definition of acceleration due to gravity. के हो त? The rate of change in velocity. Now, the rate of change in velocity. के भयो त? rate of change in velocity A equal to B minus U upon T. The rate of change in velocity equal to there के छ यार? A equal to B minus U upon T. क्रस मल्टिप्लाई गर्ने B minus U equal to AT
बी माइनस यू जाँदा के हुन्छ प्लस यू प्लस एटी के भयो त हामीलाई प्रुफ बी इक्वल टू यू प्लस एटी प्रुफ बी इक्वल टू यू प्लस एटी u means initial velocity starting velocity b means final velocity ending velocity s means distance covered t means time taken a means acceleration produced a dot b means average velocity we know that. What the definition of acceleration? What do you mean by acceleration? The rate of change in velocity. Rate of change in velocity means a equal to b minus u upon t. A equal to b minus u upon t, cross multiply b minus u equal to at, b equal to u plus at. That the proof of b equal to u plus at, u plus at. Next proof, s equal to u plus b upon 2 into t. Next, s equal to S means distance covered, U means initial velocity, B means final velocity, T means time taken. अब next proof के छ B S equal to U plus B upon 2 into T. S means distance covered. S और S equal to D. S equal to D. Figure पनि same, represent पनि के हुन्छ same. S equal to u plus b upon 2 into t. What is velocity? The displacement covered by a body or displacement per unit time. Displacement per unit time is known as velocity. The displacement per unit time is known as velocity. The displacement per unit time is known as velocity. What do you mean by average velocity? Average velocity means total displacement. Total displacement means u plus b. Total displacement means u plus b or s or d. Total displacement equal to u plus b upon 2. Total displacement u plus b equal to s or we know that average velocity a dot b equal to u plus b upon 2. U plus b upon 2. Distance covered. What do you mean formula? Velocity equal to b equal to s by t or s equal to b into t. Distance covered equal to velocity into time. B means average velocity. Distance means s equal to b into t. S equal to b into t or distance covered into average velocity into time taken or s equal to b into t. Distance covered symbol is s. Average velocity means b or a dot b. T means time taken means t. Yes. Average velocity is u plus b upon 2. U plus b upon 2 into time taken into t. That is the proof of s equal to u plus b upon 2 into t. S equal to u plus b upon 2 into t. Next proof. B square equal to u square plus 2as. B square equal to u square plus 2as. B square equal to u square plus 2as. ल सबै फिगर पनि सेम, लेट पनि सेम छ. एभरेज भ्यालुसिटी u प्लस b अपन 2 और यो पनि सेमै हो. डिस्टेन्स कभर्ड इक्वल टु
एभरेज भेलोसिटी और भेलोसिटी मात्र लेख्ने हुन्छ एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन व्हाट इज द सिम्बल अफ डिस्टेंस कवर्ड यस एभरेज भेलोसिटी a डट b टाइम टेकन मीन्स t यस एभरेज में u प्लस v अपन 2 इन्टु t अलरेडी प्रुभ गरेका थियौं अब हामीले प्रुभ के गर्न बाँकी छ v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2s अब कम्प्यारिजन गर्ने v गिवन यहाँ छ यो प्रुफमा यहाँ v छ u गिवन छ u पनि छ s छ यो प्रुफमा के छैन त t छैन भनेपछि t लाई के गर्न पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो अब हामीले पढिसकेको थियौं एक्सेलरेसनको फर्मुला के हो a इक्वल टु v माइनस u अपन t और t भने के लेख्न पाइन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने t इक्वल टु v माइनस u अपन a भनेर नि लेख्न पाइन्छ अब हामीलाई यो प्रुफमा t नभएको र यो t लाई के भने रिमुभ गर्ने भनेपछि s इक्वल टु u प्लस v अपन 2 इन्टु t भने के छ त भ्यालु v माइनस u अपन a t को ठाउँमा हामीले के लेखेको t इक्वल टु v माइनस u अपन a कहाँबाट आएको एक्सेलरेसन a इक्वल टु v माइनस u अपन t यो भने के हो a प्लस b a माइनस b a प्लस b a माइनस हामीले u स्क्वायर माइनस b गर्ने पहिला माइनस तिर हेर्ने v माइनस u छ भने यसमा नहेर्ने u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर भने कन्फ्युजन छ हामीले के गर्ने a माइनस b भएको टर्मतिर हेर्ने पहिला u कता पछ माइनस पछाडी छ v कता छ अगाडि छ भनेपछि के भन्नु पर्यो सुरुमा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपन 2a a प्लस b a माइनस b means a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्रस मल्टिप्लाई गर्ने b स्क्वायर यसको नभए कति हुन्छ 1 b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टु 2as b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टु 2as के छ हामीलाई प्रुफ b स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as भनेपछि यो माइनस स्क्वायर जाँदा के हुन्छ प्लस b स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as के भयो त प्रुफ भयो b स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as नेक्स्ट प्रुफ के छ s इक्वल टु ut प्लस 1 अपन 2 at स्क्वायर नेक्स्ट s इक्वल टु ut प्लस 1 अपन 2 at स्क्वायर सबै सेम यो प्रुफको लागि पनि यहाँसम्म सबै के हुन्छ सेम हुन्छ यहाँबाट मात्र के भने कम्पेयर एउटा प्रुफ जान्छ हामी सबै प्रुफलाई के छ सिमिलरिटी छ s इक्वल टु ut प्लस 1 अपन 2 at स्क्वायर s एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम टेकन s इक्वल u प्लस v अपन 2 इन्टु t कम्पेरिजन गर्ने s गिवन छ u गिवन छ t गिवन छ अब हाम्रो यो के छैन त यहाँ v अब यो v लाई के गर्नु पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो अब हामीले v को फर्मुला के छ v इक्वल टु अलरेडी प्रुफ गरेको थियौं v इक्वल टु u प्लस at v इक्वल टु u प्लस at अब नभएको v प्रुफमा हाम्रो v छैन यो v लाई के गर्नु पर्यो रिमुभ गर्न पर्यो u को u v मीन्स u प्लस at v भने के हो u प्लस at बाइ 2 इन्टु t therefore v equal to u plus at v equal to u plus at अब लाइक टर्म चाहिँ u लाई के गर्ने u plus u 2u plus at अपन 2 into t अब यो t ले दुवै टर्मलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने 2u into t 2ut plus 8 into t a दुईटा चाहिँ 80 स्क्वायर अपन 2 अब हामीलाई यो 2 ले दुवै टर्मलाई के गर्ने बोथ टर्मलाई डिवाइड गर्ने 2ut डिवाइडेड बाइ 2 प्लस 8t स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 2 के भयो क्यान्सल यहाँ नभए कति हुन्छ 1 s इक्वल टु के रह्यो यहाँ ut प्लस 1 बाइ 2 at स्क्वायर दैट द प्रूफ अफ s इक्वल टु ut प्लस 1 बाइ 2 at स्क्वायर थ्यांक यू दिस मच टुडे र हजुरहरुलाई यसको होमवर्क विश्वती क्लास 9 मा मैले पोस्ट गर्ने छु र हजुरहरुले पनि होमवर्क विश्वती 9 मा पोस्ट गर्नु होला हस्त धन्यवाद।